So let us do one more typical question. This one. It's an easy one. I am just doing it because it is given in quantities. That's it. Okay. So look at this question. Shetty Brothers, material A, B, C, opening stock, purchases, closing stock, and the figures are in quantity, kgs, liters में दिया है. जब last lecture हमने जो sum किया था उसमें amount में था. Now it is in kgs. So nothing to worry. We know we know that quantity and rate, when we multiply we get value or amount. So bas this funda we have to use. That's it. Okay. So inventory value कितना दिया है 10 rupees per kg और per liter. ठीक है, तो I'll be using this for conversion. Okay. Calculate the material turnover ratio. Raw material turnover ratio पूछा है and also express in number of days. Okay. They want the answer in number of days. So that means they want you to calculate the raw material velocity, the speed at which the raw material is moving. Okay. That is what they want. Okay. What is the inference you draw? That is, they want you to comment whether it is which type of raw material it is: fast moving, slow moving, obsolete, or it is a what do you call obsolete, and one more is there, no? Which variety is that? Dormant. Yep. Okay. So start with, make this particulars material A, B, C. Write down the formula. Raw material turnover ratio is equal to COGS upon average stock. COGS upon average stock. Okay, yeah. Then solve the numerator. How do you calculate COGS? Opening stock plus purchases minus closing stock. Okay. Then solve the numerator. So this is my numerator. Okay. Opening is 7,000, 2,000, 10,000. Purchases 1,15,000, 1,10,000 and 18. Closing stock 2,000, 12,000, 12,000. Okay. Then solve it. 7 plus 1,15,000 minus 2 is how much? 1,20,000. Okay. Quantity मिल गया 1,20,000 kgs. Multiply it with the rate. Rate कितना है? 10 रुपया per kg. So my answer is 12 lakhs. Next, 2,000 plus 1,10,000 minus 12,000. So my answer is 1 lakh liters. Second wala is in liters. Multiplied with 10 rupees per liter. So my answer is 10 lakhs. Okay. And last one, 10,000 into, sorry, not into, plus, sorry. 10,000 plus 18,000 minus 12,000. So my answer is 16,000 kgs multiplied with 10 rupees per kg. So my answer is 1,60,000. Okay. So this will help me to calculate my numerator. Is it clear till here? समझ में आया? Is this clear? Numerator part is clear to everyone? Okay. Yeah. Thanks. Next. Next, we will solve the denominator. So denominator, average stock formula, opening plus closing divide by 2. Okay. So substitute karo. Opening 7,000 plus 2,000 divided by 2. So 7 plus 2 is 9. 9 divided by 2 is 4.5. So see, my answer is 4,500 kgs. But ये kgs में है, अपने को kgs में नहीं चाहिए, अपने को value में चाहिए. So multiplied with the rate. So 4,000 multiplied with 10 is 45,000 rupees. Okay. So I took up this sum only for this reason, because ये quantity में था. I wanted you to show कि वो convert कैसे करना है. Next, 2,000 plus 12,000 is 14. 14 divided by 2 is 7. 7,000 multiplied with 10 rupees is 70,000. Okay.
So it's easy actually, basic maths. Then the last case, 10,000 plus 12,000 divided by 2. So 10 plus 12 is 22. 22 divided by 2 is 11. So 11,000 kgs multiplied with 10 rupees. 1,10,000. Okay. Fine. Then substitute this in your main formula. Main formula क्या है? COGS upon average stock. तो substitute करो और answer निकालो. So पहला केस क्या है? 1,60,000. थर्ड केस 1,60,000 divided by 1,10,000. 1,10,000 no? हाँ. 1.4545. So right here 1.45 times. Next case 10 lakhs divided by 70,000. So 14.285 to make it 14.29 times. Okay. Next 12 lakhs divided by 45. So it is 26.6666. That is 26.6 times. Okay, like this. So once I get this, iske baad I will calculate the speed or velocity, what we call. So while doing theory, I had told you, जिसका turnover ratio highest रहेगा, मतलब वो fast moving है, बराबर ना? Yeah. And you will get more clarity when you convert turnover into speed, velocity. सबको ज़्यादा clear मालूम पड़ता है. So the second part of the question, they have asked you to calculate velocity. And that too, they want your answer in days. So multiply with 365. If they want your answer in months, then multiply with 12. If they want in weeks, then multiply with 52. Okay? Yeah. So accordingly solve it. 365 divided by 26.6666. So 13.68. Round off kar do, it will come to 14 days. 365 divided by 14.29. 365 365 divided by 14.29. So 25.5, that makes it to 26 days. And 365 divided by 1.45, it makes it to 251.7, that is 252 days. Okay, like this. Now you will be thinking कि इसका turnover is high, but इसका velocity is less. But you don't have to see like this. You have to see 14 days may the material is getting converted into sales. Okay, like this. So you have to check it like this. So 14 days is a good time period ना, मतलब तुम्हारा stock जल्दी जल्दी जा रहा है, sell हो रहा है, अच्छी बात है. It's a good sign. So it is, label it as fast moving. Second one is 26 days. 26 days is also decent, but 14 के सामने तो कम ही है ना, तो I will write it as slow moving. Okay, stock जितना जल्दी convert होएगा sales में तुम्हारे लिए अच्छा, तुम्हें revenue मिलेगा. And last is 252 days, मतलब almost कितना 10 months के ऊपर है ना, 11 months के भी ऊपर in fact, almost. तो write here dormant. Okay. Now you will be thinking, मैम आपने इसको obsolete goods क्यों नहीं लिखा? मैं obsolete इसको कब लिखूंगी? जब ये जीरो होगा. अगर मेरा stock turnover ratio decimals में आ रहा है, 1 से नीचे आ रहा है, less than 1 आ रहा है, then I will consider it to be a what do you call it? Obsolete goods. Okay, जैसे अगर मेरा stock turnover ratio आया 0, then I will term it as obsolete. Okay, या 0 से कम 0.1, 0.9, something like that, मतलब less than 1. Okay. Clear with the sum? Is the sum clear to everyone? Just acknowledge it in the chat box. Sum is clear? Okay. So इसमें यही सब varieties है. And this, just note down the sums which you have to, practice. This question number 22. Okay, this you all practice.
Same है, material A, B, you have to find its velocity and turnover ratio. Then question number 2, question number 9, question number 26, and question number 10 में there are two. Okay, one is additional problem and one is normal one problem, like this. So total 1, 2, 3, 4, 5, 6 sums I want you all to practice. Okay, they are very easy. Okay, nothing great about those sums, very easy concept. You just have to find the turnover ratio, then you have to find the velocity, then based on this you have to comment which type of raw material it is. That's it. Am I clear? समझ में आया everyone? Yeah? Okay. Okay. Now, coming on to the last part of what do you call? Yeah, this raw material cost is this ABC analysis. Always better control. ABC मतलब always better control. ठीक है? I will explain you this with an example. ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो. Say I have a godown and I am a manufacturer of chocolates. ठीक है? तो मेरे गोडाउन में I deal into 3 types of products. Say Ferrero Rocher's chocolates. Say next is बच्चे खाते हैं ना Kinder Joy. And say one is Tic Tac. Okay, so ये मेरा products है. ठीक है? So now अभी गोडाउन में मैं इसकी सेटिंग कैसे करूँगी? एक तो सेटिंग होती है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली सेटिंग होती है, वो तो है ही. So this is also one of the inventory control management system. What? ABC, always better control. So what I can do is Ferrero Rocher's मेरा सबसे कॉस्टली ब्रांड है. So say इसका एक डब्बा से 800 का आता है. एक डब्बा, I'm talking about one box of Ferrero Rocher's. Kinder Joy is I guess for 40 or 50 rupees, right? For yeah. टिक टैक तो सबसे सस्ता है, से इट इज फॉर 10 रुपीज. ओके, तो अभी मैंने क्या कर दिया, एज अ मैन्युफैक्चरर इन द गोडाउन आई हैव कैटेगराइज्ड माय प्रोडक्ट. सो ये मेरा सबसे महंगा प्रोडक्ट है, तो आई कॉल इट एज, आई कैटेगराइज इट इन द कैटेगरी ऑफ ए. ये उससे मीडियम है, सो आई कैटेगराइज इट एट बी. और ये सबसे सस्ता प्रोडक्ट है मेरा, सो आई विल कैटेगराइज इट एज सी. समझ में आया? ए बी सी. तो जो 800 वाला मतलब जो Ferrero Rocher's chocolates है, that is 800 per box. So I know the people who will eat this will be less, कम खाएंगे. बट मेरा एक बॉक्स 800 का है, सो मैं क्या करूँगी? ओके, इसका क्वांटिटी कम रखूँगी गोडाउन में, इसका कम क्वांटिटी रखूँगी क्योंकि इसका वैल्यू हाई है. समझ में आ रहा है? हाँ. ओके. और ये जो सबसे सस्ता वाला है ना, इसका मैं सबसे ज़्यादा क्वांटिटी रखूँगी क्योंकि इसका वैल्यू कम है. और ये जो बीच वाला है ना, इसका मैं जो क्वांटिटी है ना मॉडरेटली रखूँगी, मतलब सी से कम और ए से ज़्यादा, लाइक दिस, क्योंकि इसका वैल्यू भी वैसा ही है, मॉडरेट. इज दैट क्लियर? समझ में आया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? ABC, always better control. ABC, this is how I categorize my product. The costliest product is categorized as A, moderately costly is categorized as B, and the least costly is categorized as C. Okay, so जो सबसे महंगा है, जिसका कॉस्ट पर यूनिट सबसे ज़्यादा है, उसका मैं क्वांटिटी कम रखूँगी गोडाउन में, और जिसका प्रोडक्ट जो सबसे सस्ता है उसका मैं ज़्यादा क्वांटिटी रखूँगी अपने गोडाउन में. Okay, are you understanding? Just acknowledge it in the chat box. Okay, so see, I'll give you an example here. अभी ध्यान दो, ये जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है. So देखो, ये मेरा स्टोर हाउस है, मतलब मेरा गोडाउन है. इसमें हाउ मेनी आइटम्स आर देयर? 8000 आइटम्स आर देयर. ओके, सो टोटल मेरे पास गोडाउन में कितना गुड्स है? 8000. मेरा मंथली कंजम्पशन कितना है? 16 लाख रुपीज़ का. ठीक है ना? तो 16 लाख रुपीज़ का मेरा मंथली कंजम्पशन है. ठीक है. सो एज पर ABC ये रेंज है. दिस इज द रेंज ऑफ कीपिंग द गुड्स क्वांटिटी.
10%, 20%, 70%. मतलब if your godown has 100% space, 100% space में से you have to keep 10% of A, 20% of B and 70% of C. I told you ना, जो सबसे महंगा है उसका quantity सबसे कम रखेंगे. Okay? And value wise I told you, जो सबसे महंगा है उसका वैल्यू ज़्यादा है बट उसका क्वांटिटी कम है, और जो सबसे सस्ता है उसका क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है. दैट इज ABC एनालिसिस. ओके, तो ये रेंज है, ये एक स्टैंडर्ड रेंज है 10, 20, 70. यू कैन इवन कीप 20, 30, 50. You can even keep it like this, or you can even keep 20, 40 and then rest. Okay, but ये स्टैंडर्ड रेंज है जो मैंने दिया है. So भी ये देखो, what is my goods? 8,000. 8,000 का 10% is how much? 8,000 का 10% is how much? 800. So 800 units of Ferrero Rochers I will keep in the godown. Next 8,000 का 20%. So 1,600. So 1,600 quantity of Kinder Joy I will keep in the godown. Next 8,000 का 70%. 5,600. तो 5,000 quantity of Tic Tac I will keep in the godown. Is this clear? समझ में आया? मेरे गोडाउन में मैक्सिमम स्पेस है 8,000 यूनिट्स का. आई कैन कीप ओनली 8,000 यूनिट्स इन माई गोडाउन. सो हाउ आई हैव बाइफरकेटेड माई 3 प्रोडक्ट्स. अब मैं थोड़ी ना हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग गोडाउन खरीदूंगी, 3 अलग अलग गोडाउन. नो, आई विल keep all the 3 products in one go down. This is called stock control. इसको बोलते हैं मैनेजिंग स्टॉक. ऐसा थोड़ी ना है कि फेरो रोशेस के लिए मैं एक अलग से गोडाउन खरीदूंगी, टिक टैक के लिए एक अलग गोडाउन, किंडर जॉय के लिए अलग गोडाउन. तो ऐसे अगर मेरे पास 10 प्रोडक्ट है तो 10 गोडाउन थोड़ी ना खोलूंगी. सो इन वन गोडाउन ओनली आई एम एडजस्टिंग, आई एम एक्यूमुलेटिंग इट. ओके, या फाइन. यू सी ये 8,000 इज डिवाइडेड इन दिस रेशियो. ओके, या देन 16 lakhs का मेरा वैल्यू है गुड्स का. सो निकालो 16 lakhs का 70% इज हाउ मच? 11,20,000. देन 16 lakhs का 20%, 3,20,000. and then 16 lakhs का 10%, 1,60,000. okay, so like this. So in short what it means in a nutshell कि जो तुम्हारा क्वांटिटी परसेंटेज है प्रोपोर्शनेटली वही तुम्हारा वैल्यू का परसेंटेज है. देखो 10, 20, 70 और ये इसका रिवर्स है 70, 20, 10 उल्टा. तो जो क्वांटिटी वाइज तुम ज़्यादा लेते हो वो इधर वैल्यू वाइज कम हो जाएगा. ठीक है ना? देखो ये क्वांटिटी वाइज कम है तो ये वैल्यू वाइज ज़्यादा है, ये क्वांटिटी वाइज ज़्यादा है तो ये वैल्यू वाइज कम है. इनवर्स कर दिया मैंने, रिवर्स कर दिया रेशियो को. एम आई क्लियर? Acknowledge it in the chat box. So 11,20,000 divide by 800 कितना आया? 1,400 रुपीज़. तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ. ओके, देन 3,20,000 डिवाइड बाय 1,600. सो ये मेरा 200 का गुड्स हो गया. एंड 5,600 डिवाइड बाय 1,60,000 divided by 5,600. So 28 rupees 57 पैसा समथिंग है ना. तो राउंड ऑफ कर दो इसको, 28 rupees 57 पैसा. तो 28 rupees 57 पैसा. Okay, so you can even calculate the cost if you know the value and the items. Okay, so I just give you an example of Kinder Joy, this and that. ऐसे बस मैंने ग्राफ एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए कि if I am a manufacturer of 3 different products, I will not have 3 different godowns with me. In one godown only I'll keep all my stock in this manner. Okay, so see, my first item that I undertook was Ferrero Rochers. So when I'm calculating it in a systematic way, so it is coming to 14, and I was just giving an example ki 800 ka just to make you relate. So फिर Kinder Joy is for 200, just a basic example, and Tic Tac is for 28.570. Am I clear? Just acknowledge this in the chat box.
And how will you get this per unit? This value divided by this quantity. ये दोनों को divide करोगे तो आपको per unit मिलेगा. Okay? Okay, so this is what you call, yeah, ABC. This is what I was talking about. Next lecture, I'll start with labor cost. So I'll just share the screenshot after the lecture of this theory part. You can just go through and update your notes. I've explained you the example.